Good morning, dear students. Dear students, this is the account class of class 12th. We are doing chapter 4, admission of a new partner. And in previous lecture, we have started first topic, calculation of new profit sharing ratio. Okay. And first 7 illustration we have done. And today we will start from the illustration number 8, practical question. So students, open page number 4.8 of your books and open your notebooks also. Okay, so I am reading next illustration number 8. This is same topic, new profit sharing ratio. Okay, so some concepts, some points are different in this question. Let's see. I'm reading statement. Listen carefully, students. A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. There are two partners, A and B. Okay, and ratio is 5:3. C is admitted for 1/8 share. C is a new partner and coming as a new partner for 1/8 share. Okay. Of profits, out of which half share was gifted by A. Half share is gifted by A. Means half of the 1/8. 1/8 half is equal to 1/16. That share is gifted by A. Okay. ये A ने दिया है. And the remaining share was taken by C from A and B in the ratio of 2:1. अब जो remaining half रह गया मीन्स half तो A ने दे दिया, that is given by A. Okay, and next 1/16 जो रह गया उस शेयर को A और B ने ही दिया है बट 2:1 में दिया है. Okay, 2:1 means 2/3 of the 1/16 that is again given by A. Okay, A ने ये भी दे दिया और प्लस 2/13 of the remaining portion of the C means 1/16 का 2/3. So that will be 1/24. Okay, ठीक है, 1/24. Both the parts are given by A to C. ये दोनों पार्ट जो है A दे रहा है C को. And then we will calculate given by B. अब B ने कितना पोर्शन दिया है? That is a 1/3 of the 1/16. 1/3 of the 1/16. 1/48. Okay. So now we will calculate new profit sharing ratio of all partners. So A's new share is equal to, first of all A का शेयर था कितना? 5 + 3 8. So 5/8. ओल्ड शेयर 5/8 है. So अभी A ने कितना पोर्शन दे दिया C को? फर्स्ट ऑफ ऑल 1/16 जो कि उसका हाफ पोर्शन था. देन उसने उसको दिया 1/24. So deduct 1/16 and 1/24 from the old share of A to calculate new share of A. Okay, नया शेयर निकालने के लिए आप ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे A के ओल्ड शेयर में से. Okay, calculate it. First of all, take LCM. 48 आ जाएगा. 48 पे सब कट हो जाएंगे ना. Okay, 48 is the LCM. 6 5s are 30. 3 2 30 minus 3 minus 2. Answer is 25/48. Okay. Next, B's new share. B's new share. Old share was 3/8 and given by B to C. The share is 1/48. You will deduct 1/48 from the old share of the B. Now take LCM. 48. 6 3 18 minus 1. 17/48. Okay, and then C's new share. C's share is C's share is 1/8
इसका डिनोमिनेटर आपको इक्वली करना है, सो आंसर विल बी 6/48. Okay. So ratio is 24:17 ratio. This is the answer. ठीक है students? So sometime the old partners surrender a particular fraction of their share in favor of the new partner. So in such cases, the new partner share is calculated by adding the surrendered portion of share by the old partners. So old partner share are calculated by deducting the surrendered share from their old share. Okay. So next illustration I'm reading illustration number 9, page number 4.9 in your book, DK Goel. You can see in this your screen illustration number 9. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:3. There is again two partners, A and B, and sharing ratio 7:3. Okay. C is admitted as a new partner. A sacrifices 2/7 of his share in profits in favor of C, and B 1/7 of his share in favor of C. Okay. And calculate the new profit sharing ratio between A, B, and C. Okay. So A's share, again, first of all, A's new share is 7/10, and B's new share is 3 old share B's 3/10. So A sacrifices, A surrender कर रहा है 2/7 of his share, अपने शेयर का. तो अपने शेयर का जब वो सरेंडर करेगा तो A surrender or sacrifice 2/7 of his share, means 7/10 का 2/7. Okay, तो 7 से 7, 2 1 2 1, that is a 1/5. Okay, A surrender कितना कर रहा है 1/5 शेयर, और ये किसके फेवर में कर रहे हैं C की फेवर में. तो ये C को शेयर मिलेगा 1/5, क्योंकि यहाँ C का शेयर क्लियरली मेंशन नहीं है. देन B's old share is 3/10 and B sacrifice or surrender 1/7 of his share. उसका शेयर है कितना 3/10, तो अपने शेयर का 1/7, so 1/7 of 3/10. ये कट नहीं हो रहा, so 3/70. ओके, 3/70 इन फेवर ऑफ C. उसने सरेंडर किया है किसके लिए, इन फेवर ऑफ C. C को कितना पोर्शन मिल गया, C को 1/5 भी मिलेगा जो कि A सरेंडर कर रहा है, और 3/70 भी मिलेगा जो कि B सरेंडर कर रहा है. ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियोज. अभी हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियोज. तो न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट जो करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल A's न्यू रेशियो. A's new ratio is equal to 7/10 minus 1/5. Okay. B's new ratio 3/10 minus 3/70. And C's new ratio, अब C का शेयर भी इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था आपके पास, so 1/5 plus 3/7, that portion given by A and B to C in favor of C. Okay, तो आप इन दोनों को प्लस करके निकालोगे. A ने 1/5 शेयर दिया और B ने 3/70, तो add these both the
shares. Calculate the C's new share. Calculate कर दो इसको. Take LCM. 10, 7 plus 2, 9 by 10. First, sorry, minus करना ना. 5 by 10. 7 minus 2, 5 by 10. 70, 21 minus 3. 21 minus 3, 18 by 70. And C's share 70. 14 plus 3, 17 by 70. तो डिनोमिनेटर सेम कर लो सबके. ये 70 इसको भी 70 के इक्वल करके या फिर डिनोमिनेटर एलसीएम लेके फिर से अगेन 5 by 10 रेशो 18 by 70 रेशो 17 by 70. टेक एलसीएम 35, 18, 70. 35, 18, 70. Yes, this is the correct answer. This is the new ratio. Okay, note down this question, the solution. Next, illustration number 10, you can do by yourself. Illustration 11. This is also you can do. Okay, illustration 12. I'm reading statement of illustration 12. Yes. This is a page number 4.11, illustration number 12. Okay. On 1st April 2010, Sahil and Charu entered into partnership for sharing profits in the ratio 4:3. Here two partners हैं, Sahil and Charu, और उनके ratio given है 4:3. So first of all, Sahil and Charu. There is two partners. Illustration number 12. Ratio है इनकी 4:3. Admitted Tannu as a new partner on 1st April 2012 for 1/5 share, which she acquired equally from Sahil and Charu. दोनों से equally लेगी नया partner Charu. Okay. 1/5 share. 1/2 of the 1/5, 1 by 10. 1 by 10 she will take from Sahil, and 1 by 10 she will take from Charu. So new ratio. तीनों की निकाल लो आप. साहिल new share 4 by 7 minus 1 by 10. Charu's new partner जो आ रही है उसका नेम है तन्नू. So Charu's new share 3 by 7 minus 1 by 10. And Tannu's share तो given ही है. That is a 1 by 5th. Calculate these things. 70, 40 minus 7. 33 by 70. 33 by 70. 30 minus 7. 23 by 70. और इसका शेयर है 1 by 5. तो इक्विवेलेंट कर लो इसको. 14 multiplied by 14 and divided by also 14. That is also denominator 70. Okay. So ratio will be 33 ratio 23 ratio 14 in Sahil, Charu and Tannu. Okay. Next line is Sahil, Charu and Tannu earned profits at a higher rate than the normal rate of return for the year ended 31st March 2013.
Therefore, they decided to expand their business. So to meet the requirements of additional capital, they admitted Puneet as a new partner. अब यहाँ इसके बाद after then they will admit new partner as a Puneet as a new partner. On 1st April 2013 for 1/7 share in the profits, which he acquired from Sahil and Charu in ratio 7:3. अब वो सिर्फ साहिल और चारू से ही लेगा जो शेयर ले रहा है अपना 7:3. ओके, नया पार्टनर आ रहा है पुनीत for 1/7 share and he will take 7:3 में ले रहा है. ठीक है, 7 + 3 10. तो 7/10 of 1/7, 7/10 of 1/7 he will take from साहिल. साहिल से जो वो लेगा 7/10 का 1/7 means 1/10. 1/10. Okay. And second person चारू से वो लेगा 3/10 of 1/7. 3/10 of 1/7. 3/70. Okay. So these शेयर जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 1/10 and 3/70. अभी न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए you will deduct these two things from the Sahils and Charus this share. Okay. इस शेयर में से आप ये दोनों चीजें डिडक्ट करेंगे to calculate the new ratio. Okay. So now new ratio. First of all साहिल का ऑलरेडी जो शेयर है दैट इज द 33/70. ओके, यहाँ अगर आप कट नहीं करते तो 7/70 ही है, तो हम 7/70 भी लेके चल सकते हैं इसको. ओके, अगर मैं इसको कट नहीं करती बिकॉज इससे इजी हो जाएगा आपकी कैलकुलेशन. 33/70 माइनस 7/70. सेकेंड, इसका जो आप क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप डायरेक्टली डिडक्ट कर सकते हो. सो आंसर विल बी 26/70. सेकेंड पर्सन चारूस न्यू शेयर. पहले क्या है इसका शेयर 23/70. नाउ यू विल डिडक्ट 3/70 फ्रॉम दिस शेयर. सो आंसर विल बी 20/70. ओके. एंड तनु के शेयर में कोई चेंज नहीं है, तो सिंपली जो भी शेयर था उसका वही लिख दो आप. उसका शेयर है 14/70. एंड लास्ट पर्सन जो भी रिसेंट ऐड हुआ है पुनीत, ही इज कमिंग फॉर 1/7. तो डिनोमिनेटर सेम कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10. 10/70. सो न्यू रेशियो 26:20:14:10. ओके, 26:20:14:10. All are even numbers divided by 2. सर सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको आप मिनिमम पे लेके आओगे. सो यू कैन डिवाइड ऑल दीज नंबर्स बाय 2. तो रेशियो जो आएगी 5 इधर, 7 10 13. So this is the correct ratio. 13:10:7:5. This is your answer. Note down. Okay. Next जो topic है that is the sacrifice ratio. Sacrificing ratio. This is very easy to calculate. In second chapter, we have already done this ratio, sacrificing ratio. Sacrifice ratio formula to calculate this ratio: old ratio minus new ratio. Okay. So there is an admission of a new partner. So old partners have to surrender some of their old share in favor of the new partner. हमेशा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो नए पार्टनर की फेवर में कुछ ना कुछ सरेंडर करेंगे. सो द रेशियो इन विच दे सरेंडर देयर प्रॉफिट्स इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशियो. जो भी शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पर्सन के लिए, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशियो. सो गुडविल इज पेड
to the old partners in their sacrifice ratio. क्यों? क्योंकि जितना पर्सन वो शेयर उसके लिए दे रहे हैं उसके लिए वो कंपनसेट करेगा और कंपनसेट करेगा गुडविल का शेयर. ओके, so formula is old ratio minus new ratio. Okay, illustration number 14, page number 4.13. Illustration number 14, page number 4.13. Open this page. A, B and C, there are three partners. Given ratio hai A, B, C. Ratio is 5:3:2. And they admit D as a new partner. Okay, and new ratio also given. New ratio क्या है? 3:2:2:3. Calculate the sacrificing ratio. आपको कैलकुलेट करनी है sacrificing ratio. D नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, तो ये न्यू रेशियो है आपके पास. दिस इज न्यू रेशियो, दिस इज द ओल्ड रेशियो. तो यही यूजिंग दिस फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल ए सेक्रीफाइस 5 + 3 8 8 + 2 10. 5/10 minus 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 3 10 3/10. Okay, second B sacrifice ratio 3/10 minus 2/10, and C is sacrifice ratio 2/10 minus 2/10. Calculate this thing. 2/10, this is the 1/10, this is the 0. Okay, only A and B are sacrificing. So in which ratio? 2:1. Okay,